So hello everyone and welcome back to the MVW's channel. So today we'll be solving a problem which is find the prefix common array of two arrays. LeetCode 2657 problem. So let's see the problem statement. So problem is saying that we have given two in zero index integer permutations a and b of length n. A prefix common array of a and b is an array C such that C of I is equal to count of numbers that are present at or before the index I in both A and B. Return the prefix common array of A and B. A sequence of n integers is called a permutation if it contains all the integers from 1 to n exactly. It means the numbers are starting from 1 and it is going up to n. Like n is here 50, so 50 is very minimum. Like 50 square is 2500. So big of n square solution will also be accepted. So let's see this example. Here a equals to 1324 and b equals to 3124. So at index I equals to 0, no number is common. So C of 0, which is my final resultant array. So C of 0 equals to 0. At index I equals to 1, here the index I equals to 1. This is the first index, and 1 and 3 are common in A and B. So C of 1 equals to 2. Why? Because at index 1, here you can see at index 0, no number is common. So that's why C of 0 is 0. At index 1, 3 is there, 3 is there. And before this, 1 is there, 1 is there. So two numbers are common up to index 1. So that's why C of 1 equals to 2. If index equals to 2, 0, 1, 2, like here. अभी तक मेरे पास दो नंबर कॉमन थे, ठीक है, इंडेक्स वन तक दो नंबर कॉमन थे. अब देखेंगे कि टू प्रेजेंट है या नहीं. टू भी इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, ये रहा टू. इट मींस टू. अभी तक दो नंबर कॉमन थे. नाउ अब नंबर कितने कॉमन हो जाएंगे? तीन कॉमन हो जाएंगे. सो एट इंडेक्स टू, थ्री नंबर्स आर कॉमन. सो दैट्स व्हाई सी ऑफ टू इक्वल टू थ्री. At index 3, I equals to 3 means 1, 2, 3 and 4 are common in A and B. So C of 3 equals to 4 because अभी तक at index 2 हमारे पास 3 numbers common थे. And अब index 3 पर देखेंगे, here 4 is there and also here in index in array B 4 is there and both are common. So that's why we'll increase the count of the uh, C of 3. So C of 3 now will be 4. So this is the example. Now let's see how we'll solve this problem. So basically, first approach that comes in our mind is brute force approach, and brute force approach is very simple. Like this is my first array and this is my second array. So this is my resultant array, and all the numbers are starting from zero. Like initially, all the numbers are zero. Now we'll see. Like one is there. वन वन मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये जीरो रहेगा. थ्री पे आऊंगा, मैं थ्री पे चेक करूंगा, जे को जीरो से थ्री मैच हो रहा है, ठीक है. अब अभी तक मेरे पास थ्री मैच हुआ, ठीक है. और इसके पहले क्या था? वन. वन यहाँ पे भी मैच हुआ, तो मैं स्टार्टिंग में क्या करूंगा? थ्री मैच हुआ, इंक्रीज कर दिया मैंने वन, ठीक है. फिर टू मैच हुआ, फिर मैंने इंक्रीज कर दिया. एक्चुअली भी क्या है कि देखो, थ्री यहाँ पे मैच हो गया, ठीक है, थ्री मैच हो गया तो आगे वो कंटिन्यू होता जाएगा, ठीक है. अब मैं टू को भी मैच करूंगा तो टू तो मैच हो ही रहा है. उससे पहले थ्री भी मैच हुआ था, तो ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि अगर मेरा यहाँ पे थ्री मैच हुआ तो मैं इंडेक्स आई को वन से लेके एन तक सारे को इंक्रीज कर दूंगा. तो वन 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 हो गया. अब मैं टू पे आऊंगा, टू भी मैच हुआ, तो अभी तक मैंने वन था, ठीक है. अब ये क्या हो जाएगा? टू 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 हो जाएगा, ठीक है. अब मैं यहाँ पे हूँ, फिर ये इंक्रीज कर दूंगा, देन अगेन फोर पे आऊंगा, फिर इंक्रीज कर दूंगा. सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ट्रेवर्सिंग ऑल द एरेज लाइक ए एंड बी. लाइक आई इक्वल्स टू जीरो टू एन, मैं इसको ट्रेवर्स कर रहा हूँ, ठीक है. और हर एक इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग मैं दूसरे वाले एरे को ट्रेवर्स कर रहा हूँ, विच इज वी, j equals to 0 to n. So the time complexity will be big of n square and space complexity big of n because we are using the resultant array. So that's why that will take a space of big of n size. So let's see the brute force code. So brute force code is very simple. We are creating the resultant array which is c of a dot size. जितना a का size है उतने equal. ठीक है. Now what we are doing is we are applying a loop for I equals to 0 to I less than n, which is a dot size, and we are for flag like for checking if this element is present in this array or not. That's why we are taking a boolean variable found. If it is found, then we will increase.
we'll mark it as true. So bool found equals to false initially. Now हर एक index I की corresponding we are starting from j, like j equals to 0 to v dot 5. like मैं अगर 3 पर हूँ तो 3 को मैं चेक करूंगा यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट हो जाता है जे इक्वल टू 0 पे लेस देन बी डॉट 5 चलूंगा, अगर ये दोनों इक्वल हो जाती है तो फाउंड को ट्रू कर दूंगा मैं ट्रू। अब मैं क्या करूंगा, सेकंड कंडीशन चेक करूंगा, इफ माई फाउंड इज ट्रू एंड my j is greater than equals to I. That's why we are not incrementing this, because j should be greater than equals to I. So c of j plus plus like this array, like हम जो c के corresponding index है c of j उसको increase कर देंगे and finally we will return the count. But here like the optimization is, do we need to check this array like this 4j equals to 0 to j less than b dot 5? Let's see. Here the time complexity is big of n square, and this solution is also accepted because the constraints are very low. N is going from 1 to 50, and 50 square is basically 2500, and which is accepted up to 10 is to power 8 or 7. It is accepted. So this solution will also be accepted. But we want to optimize it. So how we'll optimize it? Let's see. Yeah. So optimization is like if I am at this index 0, 1, 2, third index, which is the element of 2. So do we need to check from j equals to 0 from the starting? Do we need to check? So whatever common values are there previous to the particular index, we should just increment it by 1. Like अभी तक मैंने 1 and 3 के करस्पॉन्डिंग जो भी ऑप्टिमाइजेशन थी वो कर ली, लाइक जो भी प्रोसेस थी वो मैंने कर ली। 0 2 इंक्रीज कर लिया, 2 तक मैंने इंक्रीज कर लिया। So do we need to check from j equals to 0 to j less than b dot 5? No, because मैंने उससे पहले का प्रोसेस मैं डन कर चुका हूँ। तो उसको why we are using prefix word? Because prefix word का मतलब ही ये होता है कि मैंने उससे उस इंडेक्स से पहले की चीजें मैंने प्रोसेस कर ली है, तो उन उसका यूज कर सकता हूँ मैं। सो सिंपल मैं 2 को इंक्रीमेंट कर सकता हूँ, 2 प्लस 1 विच इज 3, एंड 4 4 ऑल्सो same process. Like do we need to check from this previous like j equals to 0 to j less than b dot size? No, because मैंने j इसके पहले जो भी एलिमेंट्स थे उनके लिए प्रोसेस डन कर चुका हूँ। So we will simply increment this 3 plus 1 which is 4. So let's see the optimization. So in optimization, what we are doing, we are creating a frequency array and we are starting with 0. We know the numbers are starting from 1. So for easiness, I am starting this from 0. So 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 का बेसिकली कोई मतलब नहीं है, आपको 1 से स्टार्ट करना कर लो, पर मेरे को कंफर्टेबल लग रहा है इसलिए मैंने 0 से स्टार्ट कर लिया। एंड दिस इज द काउंट। सो बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा 1 इज देयर, 1 इज देयर। सो मैं सिंपल मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दूंगा, ए वाली फ्रीक्वेंसी को भी इंक्रीज कर दूंगा। ये एरे ये है, बी एरे ये है, तो ए वाले इसके लिए इंक्रीज कर दूंगा, लाइक 1 इज देयर। तो मैं फर्स्ट इंडेक्स को इंक्रीज करूंगा, फर्स्ट इंडेक्स को इंक्रीज कर दिया, और बी में भी ये प्रेजेंट है, तो फिर मैंने फर्स्ट इंडेक्स को इंक्रीज कर दिया विच इज 2। नाउ सेम एज ये थर्ड इंडेक्स को इंक्रीज करेगा, ये भी थर्ड इंडेक्स को इंक्रीज करेगा, तो ये भी दो 2 हो जाएगा। एस एम एज लाइक वी विल इंक्रीज इट, ऑल द एलिमेंट्स विल बी 2। अब एक चीज देखो, यहाँ पे मैंने इंक्रीज किया ए वाली फ्रीक्वेंसी को, यहाँ पे भी इंक्रीज किया ए वाली फ्रीक्वेंसी को, तो फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। और जब भी मेरी फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी उसके करस्पॉन्डिंग में काउंट को इंक्रीज करते जाऊंगा। सो लेट्स सी द कोड, एंड बाय सीइंग द कोड वी विल अंडरस्टैंड लाइक हाउ वी आर सॉल्विंग दिस ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच। लाइक सिंपल है, वेरी सिंपल। लाइक यहाँ पे मैंने ए वाले एरे में मेरे को कोई एलिमेंट मिला, और वो वाला एलिमेंट मेरे को बी वाले एरे में भी है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 2। एंड जब भी मेरी फ्रीक्वेंसी 2 होगी, इट मींस मैं अपने काउंट वाले वेरिएबल को इंक्रीज कर दूंगा, विच इज दिस एरे, काउंट को इंक्रीज कर दूंगा। सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बेसिकली big of n, and space complexity will also be big of n because we are using the extra space, like frequency array we are creating, and count array also we are creating. So let's see the code for this. And coding part is very simple. Like what we are doing is we are creating a count variable of a dot size. Length is a dot size,
and initially the count will be 0, and this is the frequency array. Now what we are doing is we are just traversing the array a dot size up to a dot size, and we will increase the frequency of a of I. ठीक है, और इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको भी ऊपर ले सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने ए ऑफ आई को इंक्रीज कर दिया। अब मैं चेक करूंगा जब भी मेरी फ्रीक्वेंसी ए ऑफ आई टू के इक्वल होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ऑफ आई टू के इक्वल होगी, इट मींस द एलिमेंट आर प्रेजेंट, लाइक ए में भी एलिमेंट वो सेम प्रेजेंट था और बी में भी एलिमेंट प्रेजेंट था। ए में एलिमेंट प्रेजेंट था तो मैंने इंक्रीज कर दिया, 0 से 1 हो गया। बी में भी एलिमेंट प्रेजेंट है, वही सेम एलिमेंट, तो इंक्रीज कर दिया, 2 हो गया। अब जब भी मेरे पास फ्रीक्वेंसी 2 के इक्वल होगी, आई विल इंक्रीज द काउंट ऑफ दिस काउंट प्लस प्लस, एज सेम एज आई विल डू फॉर बी ऑल्सो। And finally what I will do, I will increase like initializes c of I equals to count, because यहाँ पे मैं काउंट इंक्रीज कर रहा हूँ, यहाँ पे भी काउंट इंक्रीज कर रहा हूँ, और वो काउंट मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, c of I is equal to 2, and finally I will return the c, which is the resultant vector. So now let's run and see. Yeah, it is working perfect, and here you can see it is accepted, and it is taking 0 millisecond and 100% beat. Like this is the big of n solution and optimized solution, I will say. And it is taking big of n time complexity and big of n space complexity, because we are creating here vector also, and for time complexity we are just doing a single traversal. And yeah, if you will use the big of n square technique, that will be also be perfect, because here the constant is very low, n is going up to 50, and 50 square is 2500, which is also be accepted. So what solution are acceptable, but for interview purpose, you will you will know like how we are using the prefix array technique, prefix array technique. So this is the core, and if you find this helpful, then please like, share and subscribe. तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।